Om Jnanatirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurmilitam Dena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Madhurishtam Sthapitam Dena Bhutale Swayam Rupa Kamayam Dadati Swapadakikam Vandeham Shri Guru Shri Prabhupada Shri Guru Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Bhagavatam Vitam Tam Sajivam Sadhaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Palam Sahagana Lata Shri Vishaka Vitamsha Hare Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusri Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyayevcha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So just the translation again. There is no stronger obstruction to one's self-interest than thinking other subject matters to be more pleasing than one's self-realization. आत्म साक्षात की अपेक्षा अन्य विषयों को अधिक रुचिकर सोचना मनुष्य के अपने हित के लिए इससे बड़ी बाधा कोई नहीं हो सकती है. So sometimes we criticize people that they're so selfish, they don't want to do anything for Krishna. तो ऐसा बहुत बार होता है कि हम सोचते हैं और लोगों के आलोचना करते हैं कि वे कृष्ण के लिए कुछ नहीं करना चाहते. But actually they're not even selfish. But असल में ऐसा होता नहीं है. Because selfish means that at least you know what your self-interest is. Because अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं तो आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं अपने लिए. So we can tell people that actually it's okay to be selfish, but you should know who you are. तो इसलिए हम लोगों को बता सकते हैं कि मतलब ठीक है ये आप जो अपने लिए सोच रहे हैं, कम से कम आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं. Because unless we know who the real self is, we will not be able to act for our real self-interest. जब तक हमें नहीं पता होगा कि हम कौन हैं, तो हम अपने लिए कुछ कर नहीं पाएंगे. So right now we're like fish out of water. So इस समय हमारी अवस्था ऐसी है कि जैसे एक मछली की पानी से बाहर होती है. So let's say a kind soul comes along, he's walking along the beach, and then he sees a fish lying there in the sand. तो हम ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत ही कृतज्ञ व्यक्ति आए जो समुद्र के पास चल रहे हैं और उन्होंने देखा कि एक मछली पानी के बाहर है. And he sees that the fish is suffering and he wants to help it. And उन्होंने देखा कि वो मछली जो है वो परेशान है, तड़प रही है, तो वो उसकी मदद करना चाहते हैं. So then maybe he puts the fish on a nice, comfortable, reclining chair. और उन्होंने सोचा कि चलो इस मछली को एक अच्छी सी एक बहुत ही कंफर्टेबल एक चेयर पे बिठा देते हैं, कुर्सी पे बिठा देते हैं. Or he brings the fish a nice, refreshing drink. और वो मछली के लिए बहुत ही अच्छा सा कुछ पीने के लिए लेके आए हैं. Or he brings a beautiful female fish to accompany the fish. और वो उस मछली के लिए एक दोस्त एक मादा मछली लेके आए हैं. So are any of these things going to make the fish happy? तो आपको लगता है कि क्या इनमें से कोई भी चीज उस मछली को खुश कर सकती है? No, the fish is not going to be happy until he's put back in the water. So वह मछली तब तक खुश नहीं होगी जब तक वह वापस समुद्र में नहीं जाएगी या पानी में नहीं जाएगी. Like in Hindi you have that poem, मछली जाल की रानी है, जीवन उसको पानी है. You don't need to translate that one. So the fish needs to go back in the water and then he's going to be happy.
तो जब वो मछली पानी के अंदर वापस जाएगी तो सभी खुश होंगे। In the same way, we are spiritual souls, but we're here in the material world. इसी तरीके से हम जीवात्माएं, आध्यात्मिक जीवात्माएं जो इस समय भौतिक संसार में है। So we are out of our element. तो हम अभी इस टाइम अपने शाश्वत स्थिति से अलग हैं। But in ignorance, we're trying to make ourselves happy by supplying material things. तो हम इस टाइम अपने आप को उस स्थिति से अलग समझकर हम अपने आप को जो भौतिक चीजें हैं उससे खुश करना चाह रहे हैं। Like a nice, comfortable home, जैसे कि बहुत अच्छा घर, tasty food and drink, अच्छा खाना, अच्छा पीना, a beautiful member of the opposite sex to keep us company. सामने वाले विपरीत लिंग से कोई दोस्त। That's okay. It's all right. Okay. तो दूसरे विपरीत लिंग से दोस्ती बनाना। But none of these things will ever make us happy, पर इन सब चीजों से हमें कभी भी खुशी नहीं मिल सकती। because no material thing can ever satisfy the spirit soul. क्योंकि कोई भी भौतिक वस्तु आध्यात्मिक जो जीवात्मा होती है उसको संतुष्ट नहीं कर सकती। So the problem is that we don't know what our real self-interest is. तो इसलिए जो हमारी स्थिति है इस टाइम हमें ये नहीं पता कि हमारा जो असलियत में जो हमें स्वार्थ जो हमारा ठीक करेगा वो चीज क्या है। It's like Prahlad Maharaj says, Nate vidu swarta gatim hi Vishnu. जिस तरीके से प्रहलाद महाराज कहते हैं नते स्थिति We don't know, people don't know that the goal of life is Lord Vishnu. तो बहुत सारे व्यक्तियों को नहीं पता होता कि जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वह श्री विष्णु है। And because they don't know that, then durashaya ye bahir artha maninaha. क्योंकि उन्हें ये सब नहीं पता होता तो अंत में होता है दुराशय ये अतिमानिना। So artha also means value. तो अर्थ का मतलब ये भी होता है कि मूल्य क्या है उस चीज का। So artha manina, in their minds are telling them that these external things, bahir artha, are valuable. तो इससे पता चलता है कि जो बाहर की चीजें होती हैं उनका मूल्य ज्यादा है। हम ऐसा सोच लेते हैं। It's like there are three different energies: the antaranga shakti, the bahir anga shakti, and the tatashta shakti. So जो शक्तियाँ होती हैं वे तीन तरीके की होती हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति। So we are tatashta shakti, which means that we can choose either the antaranga shakti or the bahir anga shakti. So जो हम हैं वह हम तटस्थ शक्ति हैं, इसलिए हमारे पास ये चुनाव करने की वो स्थिति होती है कि हम अंतरंगा शक्ति चुनना चाहते हैं या बहिरंगा शक्ति चुनना चाहते हैं। But actually, we are antaranga means the internal energy of the Lord, or the spiritual energy of the Lord. जो अंतरंगा शक्ति होती है उसका मतलब है कि जो श्री कृष्ण की आध्यात्मिक शक्ति होती है। But actually, although we're tatashta shakti, our real nature is antaranga shakti. जबकि जो हमारा असली व्यक्तित्व है वो अंतरंगा शक्ति है। Like Krishna says in the Bhagavad Gita, aparayami tastvanyam prakritim vidimehi param jiva bhute mahabaho yaidam dayate jagat. जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है That besides all the material energies, there is another energy, which is the spiritual energy, which comprises the living entities. जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जितनी भी सारी आपकी भौतिक शक्तियां हैं उसके अलावा भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो जीवात्माओं के साथ होती है। But foolishly, we're trying to exploit the resources of the inferior material energy. बट क्योंकि हम मूर्खता की वजह से हम जो भौतिक शक्तियां होती हैं उनकी तरफ चले जाते हैं। So Prahlad Maharaj is saying that this bahir anga shakti, or the bahir artha manina, this that we're thinking has so much value, is actually durashaya. So इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो ये अंतरंगा बहिरंगा शक्ति है
या जो अर्थ मानना है वो उससे हमें प्रभाव नहीं लेना है। Durashaya means bad shelter. दुराश्रय का मतलब होता है कि बुरा आश्रय। We try to take shelter of it, but it really can't give us any shelter or any satisfaction. तो हम उसका आश्रय लेना चाहते हैं, पर हमें उसका आश्रय लेने से कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। And then Prahlad continues, Andar yatandar upaniyamanas. That people are like the blind leading the blind. तो प्रहलाद महाराज इसलिए कहते हैं कि जैसे कि एक अंधे को अंधा चला रहा है। So we are being led to believe that material things are desirable. तो इसलिए हमें ऐसा विश्वास हो जाया जा रहा है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं वो बहुत जरूरी हैं। The whole materialistic society is trying to pull us in that direction. जो हमारी आज की भौतिक व्यवस्था है सोसाइटी की, वो हमें इस चीज का विश्वास दिलाती है कि ये बहुत जरूरी है हमारे जीवन के लिए। By advertising, by the media, social media marketing, so many ways we're just being, blasted with this concept that material things will make us happy. तो जो भी हम आजकल देखते हैं, इंटरनेट में देखते हैं, या जो एडवर्टाइजमेंट्स यानी जो इश्तेहार आते हैं, उनमें सब में हमें यही दिखाया जाता है कि ये सारी चीजें कितनी जरूरी हैं हमारे जीवन के लिए। And people become convinced. Most of the world is convinced of that. और जो व्यक्ति है, जो जनगण है, वो इस बात पे विश्वास कर लेता है कि हाँ ये ठीक है, ये जरूरी है। And all they talk about are those things. Oh, this material thing that I want, this material goal that I'm pursuing. और जो आपस में हम सब आपस में जो बातचीत भी करते हैं, वो हम इसी बारे में करते हैं कि हाँ ये चीज़ जरूरी है, ये चीज़ चाहिए, इस चीज़ की तरफ इस गोल को मतलब पाना है इस चीज़ को। And so, like Shrimadbhagwat Swami says when he starts speaking in the Bhagavatam, Shrotavyadini Rajendra Nrinam Santi Sahasrashaha. और जैसे कि शुभदेव स्वामी शुरू करते हैं भागवतम, और भागवतम में बताते हैं they have hundreds and thousands of subject matters for hearing. कि भागवतम में बहुत सारे हजारों टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ सकते हैं। They want to hear about anything except Krishna. कि वे कृष्ण के अलावा किसी के बारे में नहीं सुनना चाहते। And Shukadeva Goswami says that such people are blind to the knowledge of the ultimate truth. और जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, वो जो उच्च स्तर पर जो आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, उससे दूर होते हैं। Apashyatam atmatattva. अपश्यताम आत्म तत्व। So like this, they're blind to the actual truth. तो वह जो असलियत में जो सत्य होता है, जो उच्च कोटि का सत्य है, उससे दूर है। So we need to be careful to not follow blind people. तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अंधे लोगों का अनुसरण नहीं करना है। Because when a blind person follows another blind person, where do they end up? In the ditch. अगर एक अंधा व्यक्ति अन्य व्यक्ति के पीछे चलेगा, तो वह सिर्फ खड्डे में जाके गिरेगा। So then we need to open our eyes. इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी आंखें खोलें। Not these material eyes made up of flesh and blood. ये वाली आंखें नहीं जो कि हमारी मांस और खून से बनी है, आध्यात्मिक चक्षु। But the Shastra Chakshu. शास्त्र चक्षु। Or in Canto 3, the word used is Shutek Shita. कैंटो 3 में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वह शुद्धेक्षिता। That means we see by hearing. हम कैसे देखते हैं? हम सुनकर देखते हैं। Shruta means hearing the Shrutis, the scriptures, and Ikshita. That's the way to see. Okay, Shruta means hearing the scriptures, and Ikshita means seeing. So Shruta means जो हमारे शास्त्र है, और इक्षिता means उनको सुनना। And then we can understand that the real goal of life is to achieve the lotus feet of Lord Vishnu or Krishna. तो जो हमारा जीवन का लक्ष्य है वो यही है कि हमें श्री कृष्ण के चरण कमलों तक पहुंचना है। So Srila Prabhupada writes here in the purport that the self refers to the super self and the individual self. So श्रील प्रभुपाद पॉकेट में लिखते हैं
कि जो सेल्फ है वो आत्मा और परमात्मा है। So the point here is that the jiva, that's us, and the Lord have the same swa-artha. We have the same interest. तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो जीव है और जो परमात्मा है या कृष्ण है, उनका जो स्वार्थ है वह एक ही है। Srila Prabhupada says that this is what it means to attain oneness with the Lord. श्री प्रभुपाद कहते हैं कि यही अर्थ है कि भगवान के साथ में एकत्व का क्या मतलब है। इसका अर्थ यही है कि स्वार्थ एक होना। Our oneness is a oneness of interest. तो जो स्वार्थ है, जो एकत्वता है, वह स्वार्थ की एकत्वता है। And that's natural because we are parts and parcels of Krishna. और ये वह बहुत ही स्वाभाविक है क्योंकि हम जो है, हम जीवांश जो है वो कृष्ण के अंश ही हैं। Mamaya vamsho jiva loke, jiva bhuta sanatana. मावेशो लोको जीव लोगे जीव भूते सनातना। So because we're cut from the same fabric as the Lord, then naturally our interest, our real self-interest is aligned with the self-interest of the Supreme Self, of the Lord. क्योंकि हम उसी वस्त्र से कटे हैं, इसलिए जो हमारा स्वार्थ है वो बिल्कुल कृष्ण के साथ मिलता है। And it's only due to Maya that anyone thinks they have a separate interest. और ये सिर्फ माया का जो प्रभाव है उसी से पता चलता है कि हमारा जो स्वार्थ है वो कृष्ण के स्वार्थ से अलग है। This notion of a separate interest is what has brought us to the material world. तो ये जो हमारा समझना ये है कि हाँ हमारा अलग है कृष्ण से, इसी वजह से हम भौतिक जगत में आते हैं। Our desire to enjoy ourselves separately from Krishna. जो हमारी इच्छा होती है कि हम कृष्ण से अलग रहकर थोड़ा सा भोग कर सके, उसी वजह से हम इस भौतिक जगत में आते हैं। And Krishna says that in the Bhagavad Gita, Icha, Dvesha, Samudbhava. कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं इच्छा द्वेष समुद्भाव। That the living entities bewildered by desire and hate. तो जो जीवात्मा होती है वो इच्छा और घृणा या द्वेष से प्रभावित होती है। That we desire to enjoy ourselves separately from Krishna. क्योंकि हमारी इच्छा होती है कि हम कृष्ण से अलग होकर भोग कर सकें। We desire to be the Lord. हम चाहते हैं कि हम भगवान बन सकें। And then we hate the person who actually is the Lord. इसलिए हम जो वास्तविकता में भगवान है, हम उनसे द्वेष करते हैं। Because if he's the Lord, then that means we can't be the Lord. क्योंकि अगर कृष्ण भगवान हो सकते हैं तो हम भी हो सकते हैं, नहीं हो सकते। So this word dvesha, which means to hate or to see one as an enemy, it comes from the word dve, which means two. So जो ये शब्द है द्वेष, ये इससे आता है, छोटे शब्द से आता है द्वे, जिसका मतलब है दो। So this it means that I'm here and Krishna is there and we are separate and he does his thing and I do my thing. So इसका मतलब है कि मैं यहाँ हूँ, कृष्ण वहाँ है और वो अपना कार्य करेंगे और मैं अपना कार्य करूँगा, उनसे अलग। So hatred, envy comes from this conception that there's something other than Krishna. So जो द्वेष है वो इस तरीके से समझा जा सकता है कि जो भी है वो कृष्ण से अलग है। But then this is total Maya because there's nothing separate from Krishna. So ये सिर्फ माया का प्रभाव है क्योंकि वास्तविकता में कृष्ण से अलग कुछ भी नहीं है। And this conception gives us so much trouble. और जो हम ये सोचते हैं इससे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। It's the cause of all of our distress and fear in this world. So जो हमारा जितना भी परेशानी होती है, जितना भी हमें डर लगता है, उसका वो इसीलिए होता है क्योंकि हम ऐसी सोच रखते हैं। There's a nice verse that's spoken in the 11th canto by the Yogendras. It says, Bhayam dvitiya bhiveshara swasyat ishadapetasya viparya yosmriti tanmaya yato buddha abhajantam bhaktya ekayesham gurudeva tatma. So इसके लिए नवयोगेंद्रों ने कैंटो 11 में एक बहुत ही अच्छा श्लोक बताया है, जो
जो माता जी ने सुनाया है. So the translation is that fear arises when we think that there are two things. तो जो भय है वो जो आता है वो दो चीजों से आता है. Right? Bhayam means fear, and then dvitiya. When we think that there's two things, that there's something separate from the Lord. So भयम यानी डर और द्वितीय मतलब अलग, जो कृष्ण से अलग है. So yeah, two things means Krishna and then something other than Krishna. So जो दो चीजें हैं उनका मतलब है कृष्ण या कृष्ण से अलग. But actually Krishna is everything because Krishna is the absolute truth. जबकि कृष्ण सर्वस्व है क्योंकि वे भगवान हैं, सर्वोच्च हैं. It's like in his purport to the first verse, Shrimadbhagwat 1:1:1, Srila Prabhupada says, we don't say that Krishna is God. So जो भागवतम के पहली कैंटो के पहले चैप्टर के पहले श्लोक में कहा गया है कि कृष्ण सर्वस्व है. Because God is a limiting conception. Because God is जो भगवान है वे एक सीमित स्तर पे हैं. Because someone is God and someone else is not God. क्योंकि कोई भगवान है और बाकी कोई भगवान नहीं है. But the absolute truth is all encompassing. जबकि जो भगवान है वे परम सत्य है. So then how does that lead us to become fearless? So इससे हमें कैसे पता चलेगा कि हम भय से दूर हो सकते हैं? Because if everything is Krishna, and if Krishna is our best friend, as he says he is, right? Suridam Sarvabhutanam, then what is there to be afraid of? तो जब अब हमें पता है कि कृष्ण सब कुछ है, कृष्ण सर्वस्व है और कृष्ण हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं, तो फिर इसमें डर किस बात का? So it's only when we turn away from Krishna and try to enjoy those illusory other things, beginning with this material body, that we run into problems. So हमें समस्या तभी आती है जब हम जो माया में आकर अपने आप को कृष्ण से अलग समझते हैं और हम ये समझते हैं कि हमें भोग करना है कृष्ण से अलग होकर, तो यही हमारी समस्याओं का सबसे बड़ा कारण बनता है. And that's what this verse here is saying. Anyasya prayastvam. So ये श्लोक में यही कहता है कि अन्यस्य प्रेयस्त्वम. When these other things, यानी कि जो बाकी चीजें हैं, जो हम बाकी चीजों पे जाना चाहते हैं, prayastvam, become dear to us. हम इनको अपना प्रिय बना लेते हैं. And when we think that those things are going to be more pleasing than our self-realization. और हम ये सोचने लगते हैं कि हमारा आत्म साक्षात्कार से बढ़कर ये सारी चीजें हैं. Then he says there's no stronger obstruction to our self-interest than this. तो बात कहते हैं कि हमारी इस सोच के अलावा, इस सोच से अलग सबसे बड़ा जो रुकावट है हमारे आत्म साक्षात्कार में, यही दिक्कत है. It becomes a big stumbling block for our spiritual advancement. तो ये हमारे जो आध्यात्मिक स्तर में उच्च बढ़ने के लिए जो रुकावट आती है वो इसी सोच से आती है. So the word here is vyatikrama. So यहाँ पे शब्द इस्तेमाल किया गया है व्यतिक्रमा. Krama means step. क्रम means क्रम, आगे बढ़ना. Krama means kram. So vyatikrama is like a misstep. तो व्यतिक्रमात् का मतलब है जो हम गलत स्तर पे चले जाते हैं, गलत पद ले लेते हैं, गलत कदम ले लेते हैं. Like a step in the wrong direction. So गलत दिशा में जाना. We want to go east, but we go west. हमें इस तरफ जाना है पर हम इस तरफ चले जाते हैं. So like that, you're never going to reach your destination. So इस तरीके से हम अपने जहाँ पे पहुँचना है वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे. So this reminds us of another verse from Bhagavatam where Prahlad Maharaj says that as soon as we endeavor for our material happiness, our condition of material distress begins. So इससे रिलेटेड प्रहलाद महाराज भागवतम में बोलते हैं कि हम अगर जैसे ही हम अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करना शुरू करते हैं वैसे ही हमारे लिए समस्याएं शुरू होने लग जाती है आध्यात्मिक जीवन में. It's just like when we were living in Mayapur, my family would go just to visit Vrindavan. तो माता जी बता रहे हैं कि माता जी पहले मायापुर में जब रहते थे और उनका जो परिवार है जब वृंदावन जाता था. And so I would think, we're going to have a spiritual vacation, go to Vrindavan, it's going to be wonderful, we're going to see old friends, we're going to enjoy. So माता जी कह रहे हैं कि जब वे जाते थे वृंदावन तो वे ये सोच के जाते थे कि अच्छा हम आध्यात्मिक जगह पे जा रहे हैं, हम छुट्टी पे जा रहे हैं और हम वहाँ पे अपने पुराने दोस्तों से मिलेंगे और वहाँ पे मजे करेंगे. And every time I would go to Vrindavan with that mood that I'm going to enjoy myself,
out of so many problems. और माता जी जब ये सोच के जाते थे कि वे मजे करने जा रहे हैं तो माता जी को जाके वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं होती हैं। So then I thought, this is not working. तो माता जी ने सोचा कि ये ऐसे काम नहीं चलेगा। This mentality is not pleasing to Srimati Radharani. माता जी ने कि जो ये वाली सोच थी, माता जी को ऐसा लगा कि ये जो सोच है ये श्रीमती राधा रानी को पसंद नहीं आ रही है। So then I started actually having such a bad experience every time I went to Vrindavan that I didn't want to go to Vrindavan anymore. तो माता जी कह रहे जब वो इस सोच से वृंदावन जाने लगे तो माता जी का जो अनुभव था वो बहुत अच्छा नहीं रहने लगा और माता जी ने कहा कि मुझे वृंदावन नहीं जाना है। So then the next time that we were planning a trip to Vrindavan, I said, okay, I'm not going to enjoy myself, I'm just going to prepare my mind for suffering. तो माता जी कह रहे हैं कि माता जी अगली बार जब वृंदावन गए तो माता जी यही सोच के गए कि मैं मजे करने नहीं जा रही हूँ, मैं अपने आप को इस चीज से समझा लेती हूँ कि मैं सिर्फ वहाँ पे परेशान होने जा रही हूँ। And then I thought, yeah, I mean, I'm not the enjoyer, that's not who I am, that's not my position. तो माता जी कह रहे हैं कि माता जी फिर यही सोचा कि ये मेरी जो जीवात्मा की जो पोजीशन होती है वो ये नहीं होती कि मैं वहाँ भोग करने जा रही हूँ। So what is my position? I'm the servant. माता जी कह रहे हैं कि उनका जो स्तर है वो किस चीज का है? एक दास का है। Jivera Swarupoy, Krishnara Nitya Das. जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। So I thought, let me just go and be a servant. तो आज जी वहाँ गए और सिर्फ दास के भावना से गए। And if I suffer or enjoy, that's up to Krishna. अब उसके बाद माता जी मजे करके आते हैं या तप करके आते हैं, मैं कृष्ण के ऊपर है। I'm not the sufferer, I'm not the enjoyer, I'm just the servant. ना तो माता जी सफर करने मतलब तप करने जा रहे हैं, ना ही वहाँ पे माता जी भोग करने जा रहे हैं, वे सिर्फ एक दास के अनुसार जा रहे हैं। And when I went with that consciousness, और जब माता जी उस हिसाब से गए, I had such a nice time in Vrindavan. तब वृंदावन में माता जी ने बहुत एंजॉय किया। It's such a transcendentally uplifting experience. बहुत ही आध्यात्मिक अनुभव रहा माता जी के लिए। So then that taught me something, that whatever situation we're in, if we just have this mentality that I'm not the enjoyer, I'm just the servant, then everything is going to be good. तो माता जी ने इस अनुभव से यह सीखा कि अगर हम इस सोच के हिसाब से जाते हैं कि हम सिर्फ एक दास हैं, तो उसके बाद जो नतीजा आता है वह सिर्फ हमें आगे बढ़ाता है। And we can apply that in any situation that we're in. और ये हम किसी भी जिस भी हम आज स्थिति में हैं उसमें इस चीज को लगा सकते हैं। For example, right now I'm sitting here on the Vyasasana. मेरी माता जी इस टाइम व्यासासन पे हैं, But I'm not the enjoyer, I'm the servant. तो माता जी भोग नहीं कर रहे हैं, माता जी सेवा कर रहे हैं। So what is my service here? तो माता जी की सेवा क्या है? It's not to present my own personal opinions about things. कि अपनी राय नहीं देनी है। It's not to present my, ISKCON political agenda. कुछ भी पॉलिटिक्स के बारे में बात नहीं करनी है। It's just to present the Bhagavatam, सिर्फ भागवतम की चर्चा करनी है, the message of Srila Vyasadeva, जो हमें श्रील व्यासदेव ने दिया है, following in the footsteps of the previous acharyas, कि हम उनके नक्शे कदमों पे चलें जो हमारे पहले के आचार्य हैं, and with faithfulness to the mood and mission of Srila Prabhupada. ताकि हम श्रील प्रभुपाद का जो भाव था उसको अच्छे से दिखा सके, बता सके, समझा सके। And so if I speak like that, with this service mood, then it's going to be good for me and also good for everyone who hears it. तो अगर हम सेवा भाव से ये काम करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और जो सुन रहे हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। And also the same for all of you. You're sitting here, hearing the Bhagavatam class. और ये आपके लिए भी सेम इसी तरीके से रहेगा। So then, what is your service? Your service is to hear attentively, submissively, with respect for the Bhagavatam and the speaker of the Bhagavatam. तो आपकी सेवा क्या है? आपकी सेवा ये है कि आप इसको ध्यान से सुने, अच्छे से सुने और भागवत जो बोल रहे हैं, जो प्रवक्ता है, उनकी भी इज्जत करें। And if you hear like that, then what does Krishna say? Sadhyo vidyavaru jite
Satyo Rityavarudhyate Shishi Takshana. Takshana. I skipped a word there. Anyways, it's the last line of the second verse. Yeah. Shushishibish Takshana. He says that one who attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, then the Supreme Lord becomes established within that person's heart immediately. Takshana, in that moment. अगर हम अपनी सेवा यानी सुनने की सेवा अच्छे से करेंगे, श्री कृष्ण हमारे हृदय में उसी समय आके बैठ जाएंगे। So in whatever situation we're in, we just have to remember, I'm the servant. What is my service? How is the best way to serve in this circumstance? So किसी भी स्थिति में हमें यही सोचना है कि मैं एक दास हूँ और मुझे उस दास के हिसाब से ही अपनी सेवा करनी है। And if we